stands on the top of a pedestal. Pedestal मतलब एक प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म ना मानो काय कहता स्टैचू या चितों कुछ भी रखते हैं. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ना मानो yes or no? तो समय संगा लगाता है कि चीज़ का आता ग्राउंड एक चोस ना मानो. So ground ngata है कि ड्रॉ चोना जैसे मैं ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड ngata ड्रॉ चोना आपको ठीक है. दसा ngata है we are like simply expanding this. ना मानो थोड़े ngata precise चप चंगे चलो clarity होना. Statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. Let us say this is the pedestal. Okay, थोड़ा diagram नीचे करता हूँ मैं. This is supposed like pedestal, a raised platform. ठीक है मेरा 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. Stop it. Pedestal ये होगा तो 1.6 meter इसका height given है. That is what 1.6 meter tall statue is this one. ठीक है मेरा. Okay. From a point on the ground मतलब the point has to be on the ground. From a point on the ground, the angle of elevation, of course, ना elevation means ऊपर देखना होगा ना मानो हमें ऊपर देखना. Angle of elevation of top of the statue जी दूँगा था. Top of the statue is 60. तो angle of elevation clear now. ठीक है मेरा. So I said then 60 degree आता है क्या ना shift चोगो. So this is what like the 60 degree. ठीक है मेरा. इधर क्या मतलब आता 60 degree is the angle of Elevation of this top of this one. इसका मतलब elevation ऐसे होगा ना मानो 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45. Yet top of the pedestal is na, bottom of the statues is na, it is same. So same point say angle of this is what it is 45 degree. Achha, again and again this when we have 45 degree in a right angle triangle, the triangle is kazugano kaun sa wala type isosceles triangle. In amano an isosceles right angle triangle mata tyong pata no kaun sa side equal hoga opposite and adjacent. बस MCQ ना कॉल चूज ना क्वेश्चन दुख ठीक मेरा. If the shadow and the falana statue is of equal length, then the angle between ये हो जाते तो 45 एंगल आएगा वहाँ पे. ठीक है मेरा. ये समझो मता यू पता ना 45 ही कहीं इसका मतलब this side and this side equal. और again locate जो triangle right angle triangle का दूंगा था चिचिक हमें ये वाला मिलेगा और एक bigger one. अतः यू थोप चलो इन मानो इसी में मेरा पूरा क्वेश्चन छुपा है. बस डायग्राम पूछोगे नथिंग. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. लेट अस से द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h. सो दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड दिस इज हाइट ऑफ द स्टैचू. इन मानो यस और नो टेस्ट ना चिलो द meeting points let us label it A. This is what this point is basically B. He points on C and this is D. A B C D. डायग्राम ड्रॉ करो उसका. ठीक है प्रोसेस पिना. सो देन इसी जैसे ठीक है यहां आता है एनीथिंग एल्स यहां पे कुछ गिवन है और यहां से तो गिवन तो है 1.6 meter tall from the middle ground elevation 60 degree same point elevation top of Izabshik खत्म. इसका मतलब nothing else is given इन मानो. सो मैं कहूंगा यहां एक तुझे question move to asangalla. If this is 45 had it been like objective paper 45 ही करना यू गाता h कंसीडर जो समझो. तो ये वाला BC कितना लेंथ होगा h इन मानो. ऑब्जेक्टिव इन छोड़ू क्यों मैं इन मानो ऑपोजिट एजेस हमेशा इक्वल होना. अच्छा 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल h ही करना सही कर h ही गाउस. बस उसके बाद अपना शुरू कर लो इन मानो. आता का कंसीडर चूजेस इन ट्रायंगल ACD इन मानो ठीक. और दूसरा क्या होगा इन ट्रायंगल BCD. दोनों में से दो इक्वेशन आ जाएगा. यू आर डन विद दिस वन इन मानो. अगेन given that to find that ये का skip चूस्तो again. Now we know that what to write. ठीक है मेरा. लेकिन थोड़े fair exam fair notebook का यहाँ तक कर रूटीन ना ते habit पर lunch एक दिन सो speed increase चो पर used to चो पर ठीक है मेरा. So to find ना ताची दुगलो height of the pedestal हमने कहना है कि like let the height of the pedestal be h meter if it is given what यहाँ पे meter given है तो h meter कहूँगा मैं. Rest is same. So in triangle ना ताची जैसे in triangle छिन्मो क्यों ना चुन क्यों ना रहा है मर्जी का क्यों ना था BCD जरता है. BCD I know it is going to be H only. In triangle BCD आता कौन सा रेशियो अप्लाई करना है 10:45. Why? E respect ना E side touches. Hypotenuse का कोई रोल ही नहीं है इसमें.
length of the rope जेतो ना hypotenuse का था क्वेश्चन हो ये ना मानो ठीक है मेरा okay so 1045 equals to ngata sam chachano it is BC upon ngata chiduglo CD so 1045 sam ngata it is 1 equals to ngata sam chano BC upon it is CD so therefore BC equals to हमारे पास क्या होगा CD which is nothing but H which we have already considered it ये ना मानो equals to this one so BC ngata जो भी हमारा फाइंडिंग होगा उसको क्या करना है बॉक्स इन डिस्प्ले बोर्ड ठीक है मेरा सो BC इक्वल टू CD इक्वल टू आता सम दुगलो H मीटर डन नेक्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा ACD अगेन वेरी सिंपल इन ट्रायंगल ACD आता ना दुख अगेन 10 10 60 क्या 10 इज द ओनली रेशियो जो हम यहाँ यूज करेंगे नो सर 10 एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज व्हाट कॉट इन अमन ऑपोजिट ना एडजेसेंट सो ठीक है जी सर आता इट इज AC अपॉन हमारे पास क्या होगा इट इज DC 1060 वैल्यू सा मिनो it is under root 3 of course nata junga equal to itna we'll put or comma on the left side so what is your AC is what AC is AB plus BC you know mano AC chino आता है AB plus BC divided by DC आता chino let it be DC for a time being you know mano but हमें पता है BC DC दोनों क्या है H so तेने ये equation वो solve here आता चिदुगलो और कॉमा आता दिसते under root 3 is equals to AB is what 1.6 plus BC आता समनो H upon आता समनो H one variable one equation more than enough so this is you can cross choose और कॉमा again निकल तो संग यार mathematics से concept निकल तो H आता equation in a denominator क्या समास H चिनो variable so variable कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए हाइट यहाँ वैसे भी जीरो नहीं होगा ये ना मानो पर कॉमन सेंस so under root 3 into ngata chiduglo H equals to 1.6 plus ngata samsung H okay or comma I prefer writing variable on the left side under root 3 into H minus H equal to samsung 1.6 you know mano so under root 3 H minus H like term you know unlike terms you know like terms you know unlike terms you know they are like terms वेरिएबल सेम दोनों का पावर भी सेम है ये ना मानो ओके एक हम समझते हैं और कॉमा H करते हैं आता कॉमन फिंगर इट इज व्हाट अंडर रूट 3 minus 1 equals to आता समझो 1.6 ये सुनो तेने अंडर रूट 3 minus 1 वो योग क्रॉस चोचेस और कॉमा H equal to समझो 1.6 upon अंडर रूट 3 minus 1 ये ना मानो अच्छा तीसरी आंसर इन्ना ना तेने रेशनलाइज चोचेस ठीक है मेरा how amago rationalize ngata zete yot na bet na we are supposed to do it until and unless ngata objective में ना ABCD ना चाहिए ऑप्शन होते ना क्लिक चोचेस otherwise solve चोचने you part of zero this goes for you this goes for this number this bit oh hello DJ mana पूरा स्कूल खराब में तूने पेन हाँ this bin okay H equal to some 1.6 upon under root 3 minus 1 then rationalize this one ठीक है मेरा you हटे चुन दिया H equals to सम तुक लोग आता H equals to 1.6 upon under root 3 minus 1 into under root 3 plus 1 under root 3 plus 1 rationalize करना इसे और कॉमा will continue है ना H equal to some sorry 1.6 into under root 3 minus sorry plus 1 divided by का चीज़ A plus B into A minus B सम सानो 3 minus 1 A square minus B square formula ठीक है मेरा okay पेपर इन लंच इसको भी मेंशन कर लेना ठीक है मेरा rationalizing denominator using identity this okay और comma H equals to okay 1.6 upon some sano 2 into आता some sano root 3 plus 1 yes इन मानो अच्छा 1.6 divided by 2 सम 0.8
in a mano point both and you got 10 2 8 0.8, so this is nothing but 0.8 into आता हम देख लो under root 3 plus 1 h आ जाएगा आपका मीटर, and this is what the final answer. ठीक है मेरा, ठीक है. So again, अगर आता under root 3 value given होता है, under root 3 equal to some 1.732 approximate value. ते value आता चीज़ ते value आता चीज़ under root 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 1.732 8 चोस मल्टीप्लाई चोस कैलकुलेशन इंक्रीज चोस. ठीक है मेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है ना. अगेन हायर एंड डिस्टेंस को कुछ रखा स्पो सिर्फ दांते यूनिफॉर्म स्पीड अभी तक नहीं आया मानो सोचा यूनिफॉर्म स्पीड वो क्वेश्चन ठीक गलत तेने ते सन शेडो चनबो. ठीक है मेरा. और मो त्यो ना लन कम से कम दो बार रिवीजन इमीडिएटली सर्कल ना बोर यंपो नन ला सिल्कन गुना यंपो रिवीजन चूस. The angle of elevation of top of a building from foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Again, take it easy, stay calm. This is suppose the ground. Ground जो समझोस, ताई के ना start चूस. Angle of elevation जिस पंगा यू हाँ वो माता ता गलता चुनो यू गलता चुनो ता गलता चुनो. ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Of the top of the building from the foot of the tower. इसका मतलब माता एक स्ट्रक्चर सम रंगीस एक बिल्डिंग है दूसरा क्या है टावर है. इन अमानो ता foot of the tower, let us say this is the building and this is what your tower is. अच्छा क्या दोस्त, टावर छोटा होगा कि बिल्डिंग छोटा होगा? ओते कॉमन सेंस मता पर या टावर चेन क्या इन अमानो दसा जियो ही करना टावर नो तो चेन दो मेरे की बिल्डिंग ऐसा. ठीक है मेरा. यहाँ हाई राइज गुना ना बिल्डिंग चेन में सो हमें स्ट्रिक्टली कंडीशन है कपूर. बस मुझे इतना समझ में आ गया कि एक बिल्डिंग एक टावर है. ठीक है मेरा. द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर से एलिवेशन तो कुछ भी हो सकता है ना. इन अमानो ठीक है मेरा. वो तो जो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the tower, angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is what 60 degree. ये ना मानो तो इसका लोकेशन इसका क्या तो दोनों स्ट्रक्चर जगह फिक्स हो मसो बट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज टेलिंग अस समथिंग. ये ना मानो अच्छा क्या तो चिक पे करना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दुख दोनों जगह ई फुट करना ई टॉप ई फुट करना ई टॉप. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यू टावर नो कि यू टावर नो या यू बिल्डिंग नो कि यू बिल्डिंग नो. ठीक है मेरा. स्विजर नो आता एंगल ऑफ एलिवेशन या आता अच्छी तरह क्या साइड या लेंथ या उसका हाइट मस्ट बी गिवन हियर तो आता पता चलो. सो ना सी चिक पे का आता 30 दुख चिक पे का आता 40 दुख. सपोज मैंने डिसाइड नहीं किया दिस इज टावर दिस इज बिल्डिंग. मैं कह रहा हूं चलो ठीक है इसके फुट से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे टॉप पे करता हूं इट इज सपोज कितना 30 डिग्री. चलो लेट अस से 30. ठीक है मेरा. और मैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन करता हूं फ्रॉम दिस फुट टू दिस वन तो ये एंगल कितना होगा देख के लग रहा है तो संग इका आता सम चलो इका यहां पे 30 होगा नो. स्मॉलर इज द हाइट लेसर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो यहां पे क्या होगा 60 डिग्री और ये क्या होगा 30 डिग्री. इन मानो बस डन. सोता ई कैन डिसाइड चूज. ये तो कंफर्म है दोनों इक्वल साइज नहीं बिकॉज सेम स्ट्रक्चर है दोनों के फुट से एक दूसरे के टॉप पे अगर व्यू करूं तो वी आर हैविंग डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन. हैड इट बीन लाइक दोनों इक्वल साइज का होगा तो जितना एंगल यहां से बनेगा उतना एंगल यहां से भी बनेगा. इन अमानो त्यो चोन पो सिमिलैरिटी ट्रायंगल आता प्रॉपर्टी यूज चोंगन क्या इन अमानो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थैलेस थ्योरम ते समंग आता का यूज चोस्ते क्वेश्चन इगोना जोडो बनो. मुझे सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. तांगा तुझे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज कितना है 30 degree. From the foot of the tower is 30 degree. Top of the building. तो मतलब बिल्डिंग बचन में रखी टावर चन में रख. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. Foot of the tower इधर 30 समझो
30 angle of elevation, smaller is the height, smaller is the angle. इसका मतलब कहता है यू टावर्स वहां के यू टावर्स हो टावर यूस हो ओ क्लियर सो हमासो ठीक है मेरा नाउ ई का तो इवन क्वेश्चन कहता है ना जो अगर मैं हाइट अंदाजे में भी कर लूं क्वेश्चन का बींगा नो ठीक है मेरा बट देन अगेन वी आर रिफाइनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग you know mano there is always a scope tower nang building tene inna sama thore ngata utilization of that's it ठीक है मेरा हम को तने ऑब्जेक्टिव ना ई का संडे फरक सर होता ना यस इन्ना ngata को सोनो ई अप्रोच इन्ना को ठीक है मेरा तने यू पॉलिश हो जैसे फेयर रिवीजन बैक रिवीजन ठीक है मेरा ओके ये क्लियर हो गया ता ता ची दुगलो if the tower is 50 meter high if tower is it is 50 meter high find the height of the building. Let us say height of the building is what h meter. इन मानो ता ना ई कची छानो फायदा ची छानो कल अगर इन केस मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं सो आई कैन करेक्ट इट यस नो मेरा तो बिल्डिंग ही क्या होना चाहिए यस नो टावर एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 अरे भाई टावर ये होगा काका टावर इस नो बिल्डिंग इस नो मानो इकतुस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 टावर यूसो हमासो प्लीज करेक्ट इट इन टावर सिन मत नो माताची दुगलो बिल्डिंग वो छूने होते नो सो बिल्डिंग का हमने हाइट निकालना है और टावर इज व्हाट द हाइट ऑफ द टावर इज it is 50 meter it is 50 meter चलिए मेरा now again need place to introduce this is 90 degree this is again 90 degree yes or no okay then let us say the name of the triangle is a b C and आपके पास क्या है D दो ट्राइंगल है राइट एंगल है का ट्राइंगल नो ABC एंड DCB ये ट्राइंगल किस तो है मेरे को इन दो ट्राइंगल्स में मुझे फोकस करना है हमें क्या निकालना है द एज अच्छा दोनों केस में क्या है BC इज कॉमन स्ट्रेट स्टार्ट कर लो इन ट्राइंगल कौन सा है ABC इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस साइड एंड दिस साइड इज व्हाट 10 या कोट ऑपोजिट एंड एडजेसेंट so tan 30 equals to कितना होगा tan 30 equals to मतलब हम जान लो it is AB upon it is BC done tan 30 सा में नो 1 by under root 3 is equals to what is your AB AB is what we are looking for that is what height of the मतलब ची दुगलो building divided by आपका क्या होगा BC let it be BC only ये ना मानो yes or no इसका मतलब हमें यहाँ से ये मिला कि भाई BC equals to H under root 3 meter one of our finding इन मानो बीसी आता यूं समझ मुझे कुछ भी करना है मुझे एज पे पहुंचना है लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सेकंड गाता चीज जैसे का इन ट्राइंगल DCB अगेन यहां पे एंगल दिस इज 60 तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट so tan 60 is equals to opposite ची दूंगा था opposite is DC upon गाता ची दूंगा BC now tan 60 is nothing but it is under root 3 okay equals to DC upon गाता था चारों it is BC okay if I cross it गाता था चारों इकना और comma I'll write here ना ठीक है मेरा और comma so DC equals to कितना होगा DC equals to under root 3 into ngata sam solo BC so ina mano simple solve this ne na mano how are you very simple DC equals to ngata sam juglo under root 3 into BC done now equal to what is your DC 50 meter ठीक है मेरा BC ngata chi diches 50 meter so equation and we generally avoid writing what unit under root 3 will remain as it is put BC equals to what H under root 3 from equation 1 so मेरा go to this put BC equals to H under root 3 in this equation in amano
तेने आता है कसम सानो BC is h under root 3. Yes or no? अच्छा this thing ना और comma please continue. 50 it is under root 3 into under root 3 3h. Therefore h equal to some song it is 50 divided by 3 ngata sam sanulo meter. Divide karo. Ina mano. Therefore h equal to 50 upon 3. H equals to 50 upon 3. ठीक है मेरा then 50 upon 3 divide चोस सम ऑल्सो आता 18 point something 16 हाँ 16 point something है ना 16.6 meter up to 2 decimals ऊपर here stop here ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 16 कौन नेक्स्ट क्वेश्चन ngata ची दुगलो you do somebody sir ठीक है मेरा सम सिंगन नहीं आते ना ते मेंटालिटी जो कोठी है मेरा कि हमें पढ़ना है क्या चीज फॉर्मेलिटी माचो खबर रिवीजन चोस फ्लॉप्स ऑन होगा थिंग ना लमो चचन ठीक है मेरा अब हमको तो उस दिन के लिए वेट मत करो फिर हमारा जब आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट है संहाल ला सिलते बोल रिजल्ट्स कित पोछानो ओके टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट नाउ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन फुट टू टॉप था ना इज गोइंग टू बी सेम इन हमारा हानि कैसे ना इसका सोसो दुपिन आता अच्छा इसके ना हाइट डिफरेंस दुपिन मी दुपिन हानि देना साम दुपिन टावर हाइट साम दुपिन 50 मीटर बिल्डिंग हाइट साम दुक 16 पॉइंट समथिंग छोटा हुआ कि नहीं हुआ कॉमन सेंस ठीक है मेरा अगर मान लो गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक जो से 50 into 3 छात ना चाहिए 150 ना हा गोगोस अच्छा कहेंगे आंसर गलत बिकते जरा सो ऑब्जेक्टिव ना यूएस हम बड़े यूज मत किया ठीक है मेरा टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग व्हाट नेगेटिव मार्क्स इन हमारो हाईलाइट सब चानो पछा यूगा गलत सुनते जरा यूगा करेक्शन तो चला ओके नाउ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड ठीक है सर ग्राउंड मैं इसको देता हूं एरियल व्यू सॉरी फ्रंट व्यू रोड ngata जो शिगिना तो रोड ngata यू मानो रोड मान लो ऐसे आ रहा है चलिए मेरा रोड का जो है ना ये है ना इधर साइड का क्या है रोड के इधर साइड पे एक पोल है और दूसरे साइड में भी आपके पास क्या है एक पोल एंड दे आर ऑफ इक्वल हाइट इन मानो रोड यू हागो मंगो रोड इज इक्वल टू यू रोड मानो चलिए मेरा रोड का रोड यू नो रोड के साइड में दो पोल है दोनों का साइड हाइट कितना है इक्वल एंड द रोड कितना है इट इज 80 मीटर वाइड सो हम 80 मीटर वाइड है एयरपोर्ट है जो जरा को 80 मीटर वाइड ये 80 मीटर वाइड है ठीक है सर रोड का चौड़ाई हो गया विड्थ दोनों का हाइट भी इक्वल है ओके फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दिस टू पोल generally ngata chit kya lo if I do not read this one on the road this a point could be anywhere point between these two pole but yahan likha hai on the road on the ground so hamaso statement to statement on the ground just pasam it is somewhere here between these two you know mano okay the angle of elevation of top of the poles are 60 and 30 degree respectively iska matlab angle of elevation iska chiduk dono different hai matlab you confirm so the point is not at equidistance from the pole point po equidistance में क्या zoom करा में क्या चाहिए है ना angle of elevation 60 ना 30 चारू had it been 45 degree इसका मतलब point करो क्यों ना बिल्कुल zoom करी का इन हमारा so poles again आता 9 10 ना 90 degree vertically on the ground so now point इकल तो जा it is your choice to wherever you want to place the point suppose this is the point चाहिए है ना confirm so it is not the mid point अच्छा 60 डिग्री ई कने फॉर्म होना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यहां से फॉर्म होगा नियरर टू द ऑब्जेक्ट मोर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इन अमन ऑफ व्हेन वी गेट क्लोज टू द ऑब्जेक्ट नता चनलो एंगल ऑफ एलिवेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज चनो ओके सो दिस इज व्हाट वन ऑफ योर एंगल ऑफ एलिवेशन ताई का एरो मत ना मंडिया एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 100% आता था हम लोग 60 डिग्री एंड फ्रॉम यहां से होगा आपका क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इट इज 30 डिग्री खत्म कहानी खत्म ता क्वेश्चन से अब यहां पूछा क्या है रिस्पेक्टिवली मतलब भाग मंगवा रिस्पेक्टिवली पहले वाले का पहला वैल्यू दूसरे वाले का दूसरा वैल्यू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स
and the distance of the point from the pole and the distance of the ये point है. Find the height of the pole. Suppose let h be the height of the pole. If this is h, this is also h. They are of equal height no mano. H value pinchono. Yang singata chi pinchono. The distance of the point from the poles. Ina mano. E distance po. Yeah. E distance po. Chira mera again equal to to find given that is something chira. Suppose equal to sta. So I'm equal to. मैं कहता हूं भाई each of case in especially जब total length is given variable sum signa match in यूं చూస్తే బోర్చెస్ suppose इस pole का let us say this is pole 1 and this is pole 2 pole 1 का point से कितना distance है let us say it is x meter you know मानो let us say the point का distance from the pole 1 is what x meter so पोल 2 का डिस्टेंस पॉइंट से क्या है x ही होगा नो बिकॉज ये मिड पॉइंट तो है नहीं तेरे आता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट y ये वाला जो डिस्टेंस है इंस्टेड ऑफ राइटिंग y मीटर तो वी आर हैविंग व्हाट टू वेरिएबल y डिना वेरिएबल सम सिंगन ना कट చూస్తే బోర్ तो ఈ का सम डिना देनो आता इट इज 80 minus x वासो मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा ये ना मानो चलिए मेरा लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल 1 from the point B x meter or to this some you distance so mera let the distance of pole 1 P1 from the point on the road B x meter and distance of pole 2 B 80 minus x meter ये लिखो इसको you know other than atachi duglo content given that to find out the distance ठीक you know ओके नाउ इक्वल तो से ये हमने लिख दिया डन नाउ यहां देखो अगेन हाइट एंड डिस्टेंस अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां पे पॉइंट लेबलिंग कर लेते हैं लेट अस से दिस इज व्हाट P1 फॉर बोरिका P2 बोर लेट अस से दिस इज A दिस इज B एंड दिस इज C ठीक है मेरा इन ट्रायंगल का इन ट्रायंगल कौन सा कोई भी ले लो इन ट्रायंगल कौन है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल A नहीं P1A नंगाता ची दुगलो B हालांकि ई का नेमिंग बिकॉज पोल हमने पोल 1 कह देना पोल 1 फॉर आइना दिस P1 ई का ची दुगलो P2 सो A B C D एंड E इज दिस तो वर्टेक्स को वर्टेक्स ही रखो इन मानो सो इन ट्रायंगल नंगाता ची दुगलो EAB अच्छा 10 60 equals to some channel opposite upon adjacent 1060 is nothing but the next line का आता और कम आता है 1060 is √3 equals to what is your AE आता है h divided by what is your AB is x meter ना मानो therefore h equals to कितना हुआ √3 into x meter of course equation number 1 इन मानो yes or no अच्छा यहां से मुझे ये पता चला we have how many variables 2 मतलब one more equation is required you know मानो 2 variable 2 equation 3 variable 3 equation again next step इकडेस मैं यहां पे एडजस्ट कर रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा EAB हमने यूज कर लिया DCB चिन्ह होता है 10 30 equals to सम देखो 10 30 equals to it is opposite upon आता ची दुगलो adjacent BC. What is your 10 30? 1 upon under root 3 is equals to what is your DC? H and what is your BC? 80 minus X. In a mano. और comma 80 minus X is equals to कितना होगा H under root 3. And this is what your equation number 2. ठीक है मेरा इन मानो
Simple. Again simple kata. Statement have owner height and distance very scoring. In fact, 10th class is scoring agar have owner. Mano. Have go super teng al chano pa. Ha. Syllabus sara miruk. समझ गया डन इतना हो गया ताई का तुझे योर चॉइस इक्वेशन 1 and equation 2 linear equation ngata ngala siltano che mera putting h equal to under root 3x from equation 1 into equation number 2 we have alternatives this put h equal to under root 3x from equation 1 into equation number 2 guess what is put h equal to under root 3x from equation 1 into equation number 2 we have तो हम लोग टाइम बचाएंगे without actually writing what the entire equation so we have what we have क्या होगा भाई हमारे पास इक्वल तो 80 minus x equals to under root 3 खराम करना जुलूस h जाएगा under root 3 into x variable converts हो only one variable x we can determine the value of x from here itself then आता है next step भी करता हूँ 80 minus x equals to under root 3 into under root 3 3x अच्छा ही करते right side shift चोस समझानो 80 equals to 3x plus x so generally we prefer writing what variable on the other side 4x equal to something 80 so 4 ones are 4 20s are therefore x equal to 20 meter x equal to 20 meter ina bano x equal to 20 so maso अच्छा x 20 छ ना समझी सर x equal to 20 अच्छा ही का तो x equal to 20 गाती आंसर है ना x equal to 20 आंसर है ना मानो you did sir ama sir now therefore distance of pole 1 from point on the road is equals to कितना है 20 मीटर ये आपका आंसर है ठीक इन मानो सेकंड कहता चाहिए चलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम पॉइंट ऑन द रोड इक्वल्स टू कितना है 80 minus x इन मानो which is 80 minus 20 which is 60 meter answer इन मानो मिड पॉइंट में रुक दुआ चिक 20 डिस्टेंस दूरी का चिक 60 डिस्टेंस से दूरी का है ना मानो अच्छा दिख तो आंसर नो दरूंगा था चिक चलो हाइट भी तो बताना है भाई है ना मानो if x equal to 20 meter then h equal to some under root 3 into x you sir this is what is and since x equal to कितना है 20 meter therefore h equal to since last वाला लाइन है ना since x equals to 20 meter therefore h equal to some look under root 3 into x is what you are 20 generally we write what rational on the left side and this is what convention 20 under root 3 meter और ये हो गया आपका आंसर हाइट चलिए मेरा प्रोवाइडेड का तो under root 3 value 1.732 नेन ते मल्टीप्लाई चोस्ते प्लीज रहा कैलकुलेशन शार्प चोस चलिए मेरा हाउ मगो सो 9 10th ना पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहो सुनो नॉट ओनली अबाउट द कांसेप्ट डन सो मसो ठीक है Next question number 18. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. See figure 9.12 नहीं हमने लाया नहीं figure
ठीक है तम शिंगन फिगर अमलता until and unless ngata जरूरत नहीं ठीक है मेरा ओके पर ngata डायग्राम ताओ सोनो पर ठीक है मेरा ओके find the height of the tower and the width of the canal so ngata ika jene ya sama sangala diagram ngata chokos bhai a tv tower stands vertically on the bank of the canal let us say this is what the width of the canal ngata width of the canal yunna ihago mago chuzu yonstro ठीक rather than izu chona ngata chung answer mano diagram ठीक है मेरा सो कनाल के एक साइड में व्हाट यू नोटिस इज लाइक अपने एक टीवी टावर यहाँ पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है यहाँ पे ठीक है सो व्हेन आई से वर्टिकली स्टैंडिंग मतलब इट इज व्हाट 90 डिग्री इन अमन ऑफ टीवी टावर from a point on the ground on the other bank directly opposite to the chiduglo tower ताई का इमेजिन चूज या फॉर एग्जांपल कहता यू दिस इज द कनाल इन अमन ऑफ अगर मैं यहाँ पे टावर इरेक्ट करता हूँ इन अमन ऑफ डायरेक्टली ऑपोजिट मींस 90 डिग्री रिलेशन होते हैं का क्या मेरा जस्ट डायरेक्टली ऑपोजिट अदरवाइज ही कल तो वेरिएबिलिटी ई का वेरिएशन थोड़े एलिमेंट देना है क्या मेरा ई का आता 30 डिग्री एंगल शिफ्ट करना क्या हो क्या मेरा यहाँ आता है ग्राउंड वो एलिवेटेड होता है क्या पॉइंट है बंदा यहाँ से देख रहा है भाई ऑलरेडी आपका क्या है 90 डिग्री यू आल्सो नो तो वेरिएबिलिटी से सम थोड़े थिंग इलास ठीक है मेरा सो फिलहाल अभी इसी को यूज टू कर लो इन ये चीज दूसरा डायरेक्टली ऑपोजिट मतलब सिंपल कर दे केस ठीक है मेरा ओके यू हैव अ डायरेक्टली ऑपोजिट मतलब ये हो गया ओके the angle of elevation of top of the tower is 60 degree so this is what your tower is so this is the bank on the opposite side angle of elevation ही कहना साम दुगलो 60 degree top of this tower in amano so 60 degree means ngatai ka sam no this is what 60 degree is done the angle of elevation of top of the tower is 60 okay from now ikal tosta from another point एक और point 20 मीटर अवे किससे फ्रॉम दिस पॉइंट कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट जहां से 60 एंगल ऑफ एलिवेशन था ना ही करतो जा कलतेस नहीं करना है ई करना है करतो जी करतो समय करतो इमेजिनेशन आगे नहीं करना इफ दिस इज द कैनाल एंड दिस इज व्हाट योर वर्टिकली इरेक्टेड पोल इन नंबर ऑफ हटा है तो नो बट 3D 2D ना होना यही होगा द पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 60 वो क्या था आपका इट वाज दिस पॉइंट इमेजिन सो मसो ठीक है मेरा इमेजिन टू संगता है कैनाल इस का वर्टिकली ऑपोजिट था और मैं यहां से व्यू कर रहा हूं इट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस बट अगेन 3D 2D ना इन थोचो नो इमेजिनेशन सो मसो नाउ दिस इज द पॉइंट जहां से एलिवेशन 60 बना दैट इज व्हाट वी हैव ड्रॉन इट फ्रंट व्यू फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट द 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट कुड बी इन एनी डायरेक्शन भाई 20 मीटर यहाँ पे भी होगा डिस्टेंस 20 मीटर यहाँ पे भी हो सकता है 20 मीटर कहां 20 मीटर कहां ये नंबर वो कहीं पे भी हो सकता है बट लेकिन इसको और रिफाइन करते हैं दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर ऑन द लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन नो मानो लाइन ऑन द लाइन ठीक है मेरा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर यानी कि इन फुट ऑफ द टावर जॉइन सो मसम तो ये आपका एक ही लाइन है इन लाइन वो क्या होता है लाइन वो इतना एक्सटेंड होता है चूस्ते in amano so the another point which is 20 meter away from this point is what ये वाला लाइन होगा ना कि यू मतलब रेडियली कुछ भी हो सकता है ना मानो सो मतलब ये लाइन बसो सो दिस लाइन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मेरा ओके यू चुनेंगे पो मतलब पॉइंट को मैं यहाँ पे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ सर इन amano on the bank 20 meter away from यानी कहता we are moving away from this point ई पॉइंट ही करना which is like 20 मीटर अवे मींस ये वाला डिस्टेंस आ गया इन अमन ऑफ ये डिस्टेंस हो मसो यू कनाल इन ऑफ छू जो यो सम छू ठीक है मेरा हम मनो सो 20 मीटर अवे मींस ये किया मैंने ओके नेक्स्ट कथा ची दुगलो स्टेप नेक्स्ट स्टेप ची दुग 20 मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज कितना है 30 डिग्री ऑफ कोर्स व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर द एंगल ऑफ एलिवेशन ची छानो reduces decrease so naturally ngata ka 30 of some so angle of elevation e point kana sam duglo इस पॉइंट से कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री बस डायग्राम टिक बस क्वेश्चन फिर उसके बाद लोकेट करना है दो ट्रायंगल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल हाइट ऑफ द टावर लेट अस से दिस इज h एंड विड्थ ऑफ द टावर ngata चिनोलो विड्थ ऑफ द कैनाल को मैं कहता हूं x ठीक है मेरा लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर and width of the canal be x meter oh to this
given that yoga this let the height of the tower be h meter and width of the tower be कितना x meter. So this is what the width of the canal कहता है. And of course we are supposed to put what like unit in मानो x meter तो चूज आदत तो x meter यहाँ पे कितना h meter. This is the height of the मतलब चिन्ह tower. ठीक है मंडे. हाँ कमांगो ताई का तुझे. Suppose this is what point A, ये point चिन्ह B, ये point चिन्ह C, ये point क्या है D. बस दो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल इन ट्रायंगल A B D चिक चिक यहाँ से चिक पो यहाँ चिका नो चिक चिक A B D ट्रायंगल यहाँ से चिक पो A B C ये ना मानो खत्म कहानी छे मेरा. So again content कहता चिन्ह इन ट्रायंगल A B D छे मेरा मता चीज जो नो 10-30 of course ना मानो. So most of the cases कौन सा रेशियो फ्रीक्वेंटली कहता यूज करूँ 10 ना कोट छे मेरा. बट इसका मतलब जरूरी मत क्या इन्ना स्कैन का यूज साइन ना कोसेगायोस कोसायोस 10-30 equals to some no opposite upon the adjacent that is BD. 10-30 is nothing but 1 by root 3 or comma of course is equals to what is your AB. AB is height of the tower divided by what is your BD. BD let it be BD for a time being no mano then or comma H BD equals to कितना होगा H under root 3 in amano. But we know that BD is what? BD is BC plus CD equals to H under root 3. Therefore, मैंने क्या किया? BD को replace किया. We have written what BC plus CD. In amano, ये लिखा है यहाँ पे. अच्छा, what is your BC? X CD चिन्ह होता है 20 is equals to H under root 3. You choose the box in a disk. Equation number 1. चलिए मेरा चलिए मेरा अच्छा तेरे यू समझी सर इक्वेशन नंबर टेक चोस पिनेगा दिस पिना ता इन ट्रायंगल का दिस जुंगे शी कनेक्ट मैं यहां से हटा देता हूं ठीक है मेरा क्यों पर दिस आने क्यों स्पाइक यान साने पूरा ठीक है मेरा ध्यान से थोपा ठीक है ओके नेक्स्ट ठीक है तो जाए इक्वेशन समझ दिस तो जाए इन ट्रायंगल का दिस कहते इन ट्रायंगल ABC है ना दिस इज व्हाट ये आपका डी था इन ट्रायंगल ABC नाउ ता इजम क्वेश्चन जो ते आइडिया कर रहा है मेरा यही तो होना है इन मानो बस यही लोकेट करते जाना ता एनसीईआरटी बुक पर असाइनमेंट इतो मालता एनसीईआरटी बुक पर सेम क्वेश्चन डिफरेंट पेज का ना सही सोसो सोचन हां मगो the best way to counter your what hesitation not you now in triangle this nata chi duglo 1060 is what 1060 degree equals to what we have AB upon opposite upon nata chi duglo BC and 1060 we know it is nothing but 1060 sa meno root 3 acha 10 a complement you know cot sa meno cot 30 60 plus 30 is 90 complementary no mano okay AB nata sam chanalo H and what about your BC? It is X. Therefore, H equals to under root 3 into another sum of X meters. This is equation number 2. In amano. So we are looking for X as well as Natachi Duglo H. Dono dekh raha tha in amano. So put H equal to राय मर्जी कहीं से कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो जो कन्वीनियंट होगा वी विल गो विद दैट बट यूटी सर सर क्या मेरा समझ डिस्पिन है डिस्पिन है काय का तुझे इक्वेशन 1 समझ में था x प्लस समझ में x प्लस 20 इक्वल्स टू समझ में लो h अंडर रूट 3 है ना
This is what like equation number 1 उत्पन्न करता है. Then next करता है दोगलो h equals to under root 3. क्या ना you repeat मत होना ठीक. मैं repeat कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है मेरा. So मसो ताई क्या ना तो यार substitution method कौन सा method ठीक रहेगा? Substitution इतना substitution elimination ना cross multiplication syllabus ना हटाए सुन तो but we know text number 1100 1221 very important. कल तेज नॉन मेडिकल परस्यूट हो ना बीच में आता है दो जगह जहां एप्लीकेशन चाहिए ठीक है मेरा. तो फिर उस टाइम पे क्यों मैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हूं यार. x plus 20 equal to this काउ ना मैं काउ पुट चुना आता कन्वीनियंस ऑफ पुट h equal to this yes or no already variable separate चूज दो पुट ये जरूरी मैं क्या पकी 1 से सेकंड में पुट करना है भाई. यू कैन पुट व्हाट फ्रॉम सेकंड टू 1 में पुट कर सकता हूं. पुट h equal to under root 3x from equation number 2 into what equation number 1. So मेरा we have what we have this now we have x plus 20 is equals to h जाएगा क्या लिखूंगा under root 3 into x into यहाँ पे क्या है already under root 3 in a manner. Then or comma again next step ना or comma x plus 20 is equals to root 3 3 into x 3x x shift हो जाएगा लेफ्ट साइड गया ना मानो और comma 20 is equal to 3x minus x side change sign change. So this is basically what 2x equal to ngata samso 20. Therefore x equals to 10 meters. इन मानो मीटर ही था ना हाँ तो 10 मीटर होगा ना. So x ngata ची होता ना BC ना मानो ngata ची फिंग जाते तो गुना. Yes, the width of the canal x equal to 10 or some else. Then you apply this. Therefore the width of the canal is width. Width of the canal x equal to ngata sum of 10 meter. This is your answer. In amaro answer in nazu tamses x equal to jete mabor width tisadu width height tisadu height. Se mera tene ngata chi duglo agar x 10 hona what about your height 10 into root 3 in amano yes or no. If x equal to 10 meter then height pasam se no therefore h equal to root 3 into x pasam duk 10 root 3 this pina. Simple again. Ding answer are you clear? Okay, next question number 19. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. Again, start with what diagram karo on the ground. From the top of 7-meter high building. 7-meter high building. मैंने बना लिया यहाँ पे भाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग. लेट अस सी इसका हाइट कितना होगा. इसका हाइट जो है वो कितना है 7 मीटर. तब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर से बड़ा होगा छोटा होगा देखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज व्हाट 60. इसका मतलब केबल टावर पर रिंग में होता ना कि ये बिल्डिंग में रिंग में होता ना केबल टावर. इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इन हमारा सुबह छोटा सा रखता हूँ. इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना पड़ रहा है. दैट मींस उसका हाइट बड़ा होगा भाई टावर. इन हमारा जब मैं कह रहा हूं दोनों स्ट्रक्चर का था चिन्ह वर्टिकली होते हैं हमेशा ही चूज until and unless it is not stated. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है कि टॉप ऑफ केबल इज 60 डिग्री. ये सुनो ताई गल तो पहले एलिवेशन वो खत्म चूजी करना है. ई बिल्डिंग है कहना व्हिच इज 7 मीटर हाई फ्रॉम इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट 60. अच्छा ये गल तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा करना सानो विद रिस्पेक्ट टू I side is a line again. No, the horizontal line is what basically the reference line. So यहाँ पे दिख नहीं रहा. That means we can definitely show it by using what dotted line. In a mano, this is your initial position. You are looking straight. So from here you are to elevate. In a mano, so you can elevate. Just you are having what angle of elevation something like this, which is nothing but कितना है? It is 60 degree. ठीक है sir 60 हो गए. And of course you 90 होता ना, you are 90 है. So why?
corresponding angles of two parallel lines. ठीक है मेरा, और ट्रांसवर्सल से ये होगा. अच्छा, रियोडिक आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज कितना है? 45. का कने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. मतलब 3 फुट जतनो. एंड इट्स फुट किसका फुट? हाँ, 3 फुट इनो फ्रॉम द टॉप ऑफ, देखो कहानी देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. यहां पे हूं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ईट बिल्डिंग का. सो हम आसो 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. का नाउ सुनो, बिल्डिंग नहीं का सुनो, मानो डिप्रेशन इन मानो. नाउ द डिप्रेशन व्हेन आई से इक्वल टू अगेन इक्वल टू डिप्रेशन है ना, इनिशियल पोजीशन का खट्टा आता है. डिप्रेशन मींस यहां से फिर नीचे देखना है, रेफरेंस यहां समझ. तो यहां से मुझे नीचे की तरफ देखना है डिप्रेशन. सो दिस इज व्हाट योर डिप्रेशन फुट ऑफ दिस. अच्छा, डिप्रेशन एंगल करो सुनो, दिस इज द डिप्रेशन एंगल इन मानो, एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट ई ट्रायंगल इन सॉल्व जो ना, इट इज बेटर रेयर. अगर ये 45 होगा, certainly we can say this angle is also what 45. why? alternate interior angle थियो lunch का जोड़ डाउन చూస్తాం इन मानो alternate interior angle ngadachi duglo parallel line होता. अच्छा, इगतोस क्वेश्चन सॉल्व छात होंदो था मुक. यू 45 इन ना, ई ट्रायंगल कौन सा है? What triangle is this? Isosceles triangle. The opposite and adjacent are always equal. If this is 7, it has to be 7. But हमें क्या width पूछा? Determine the height of the tower. हमें height of the tower पूछा यार. इन मानो height of the tower is nothing but it is, ये पूरा आपका क्या है? height of the tower है. भाई एक चीज हमें ये कंफर्म है, this part is 7. इसका मतलब ये भी तो 7 ही होगा. यहाँ 7 सौ मसो. इन मानो यहाँ 7 सॉन्ग आता है, बट लेकिन इन 7 से दूरी का तो जाए, यहां से यहां तक ये 7 आ गया. ठीक है, बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल या रेक्टेंगल ही केस है ना. इफ दिस इज 7, दिस इज आल्सो 7. नो 7 मीटर इन मानो, ये लेंथ कौन सा मिनो? 7 मीटर इनो. अच्छा, अगर मैं इसमें x मीटर कहता हूं इसको, ये x मीटर है ना, मताची क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज height of the tower. Height of tower is x plus 7 meter. इन मानो height of the tower is entire x plus 7. तंगाता है का x कौन सा नो, x का नहीं क्यों गाता ई ट्रायंगल है ना. सो अगेन यू लेबल इट गाता ची दुगलो a b c d इका ची दुगलो e पॉइंट. तो कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल a e b कौन सा? 60 respect in a this and this opposite and adjacent. So tan 60 equal to tan 60 equal to opposite upon adjacent. So tan 60 is nothing but it is what? Under root 3 is equals to what is your AE? X. What about your BE? 7. Therefore X equal to 7 under root 3 meter. इन मानो, बट x is not our finding, it is what अताची नो means to an end. इन मानो हमें तो ये यूज करना है इसको. Therefore कहने आता है the height of the tower is what? Height of tower b. Therefore height of tower is rather सामने आता है x plus 7. x पर सामने आता है 7 under root 3 plus 7. इन मानो 7 इसके कहना कॉमन क्यों ना, 7 अगर बाहर निकाल देता हूं, we have what? Under root 3 plus 1 meter. Now that is your choice. Under root 3 का चीज is 1.732. ठीक है मेरा, तेरे मल्टीप्लाई तो 8 चोस मल्टीप्लाई तो अगेन चीफ है अपन नो कैलकुलेशन इफ है. ठीक है मेरा, यस डन. नेक्स्ट चले अगेन सिंपल. ठीक बता एनसीईआरटी सॉल्व चोस एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व चोंगे ना. ठीक है मेरा, लंच करते आऊं यूं मलता सॉल्व चोंगे ना इंटरेस्ट आनो. ठीक है मेरा, टॉपिक ची के कहना क्वेश्चन करते क्वेश्चन सुम में कहना इंटरेस्ट होना, टॉपिक ची का इंटरेस्ट हो, टॉपिक ची का इंटरेस्ट होना, सब्जेक्ट ची का इंटरेस्ट हो, सब्जेक्ट ची का इंटरेस्ट होना, सब्जेक्ट समय का इंटरेस्ट हो. ठीक है मेरा, तेरा लाइफ इन इंटरेस्ट हो अचीव सिचुएशन अचीव सो अदरवाइज चलते रहो. ठीक है मेरा, सो सीला सिल चीतों से प्रोडक्टिव ने ना. ठीक है मेरा,
दरअसल ना डेमो चूसे सीना रिजल्ट 100% और फॉर श्योर genuine effort ತಾನ ಸೊ ಅಮ್ಮ religiously effort ತಾನ result nobody can stop you provided health है क्या ला ठीक है मेरा फिर उसमें मजा भी नहीं आता यार चीना मानो लाइफ इन पता मैं क्या अचानक आऊं यूं आसकान दो एग्जाम सा मानो चीची ना भी को मैंने कर लिया वो देयर इज नॉट एन अचीवमेंट तो आता है शूटिंग इन द एयर इन मानो तीर आसमान में छोड़ना है तेसी ना टारगेट पुकुरी सो आते तीर बोकर सना तेगा चिक फोगर छे मेरा तिजु लाइफ जीना है कि खट्टा आता ची दुगलो बुल साइन अप टारगेट का खट्टाएंगे चूजेस फर्क है ना इसके नहीं ना मानो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आता ची दुगलो अगेन या इतना डिफरेंस नहीं लाइट हाउस और क्वेश्चन का तो सो 21 22 अच्छा क्वेश्चन आई थिंक क्यों मेरा तो यूनिफॉर्म स्पीड चन फिजिक्स प्लस का ताची दुगलो मैथ्स किसके ना इन एनी केस and as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree that means lighthouse ना तायोंगा चलिए मेरा शिप मून लोकेट चुचे से पे सो एक तो कंफर्म है दोनों शिप क्या है are they equal distance from the tower या lighthouse no they are not having equal distance from the lighthouse चेस है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो दे आर डिफरेंट you know mano again okay if one ship is exactly behind the other now this is very very important line ka to if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse ठीक है मेरा find the distance between the two ships अब शिप होगा पानी में तो पानी हो चाहे आता ग्राउंड हो चीज ना अगेन सपोज दिस इज सरफेस ऑफ द वाटर as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level चलिए मेरा छोड़ दो इसको suppose this is the lighthouse and lighthouse का जो है height कितना it is 75 meter high you know मानो 75 meter high ठीक यहां से टॉप से मैंने ऑब्जर्व किया ना मानो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ताक दूसरा टावर जी का दे ऑब्जर्व द बेसिकली एक्टिविटीज ऑफ द प्लेन ना मानो तेना सोला था शिप ही करना लाइट हाउस ही करना समबडी इज ऑब्जर्विंग इट तो है मेरा अब शिप तो यही पानी में होगा तो नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ क्या होना चाहिए डिप्रेशन देयरफॉर इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ये ना मानो टू शिप्स यार मान लो समुद्र के बीच में होगा लाइट हाउस तो समुद्र का यूं सच ना मानो तो आता each of case in we have two possibilities दो शिप होगा चल ठीक है एक शिप मैंने यहां लगा दिया एक शिप मैंने यहां पे लगा दिया ये भी तो हो सकता है या दोनों शिप मेरा ऑन द सेम साइड ऑफ द व्हाट लाइट हाउस और तो आता कने क्लियर सरुक ई कने क्लियर सरुक इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse सेम साइड यानी दोनों या तो लेफ्ट में होगा या दोनों राइट में होगा सो इसको रूल आउट कर लेते हैं विल कीप ओनली दिस टू ये आपका एक शिप है एक शिप आपके पास है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड मतलब एक ही लाइन में ठीक है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन शाहरुख एक 30 है एक आपके पास कितना है 45 नाउ यू नो 45 नियर टू द ऑब्जेक्ट डिप्रेशन भी तो हमें क्या है नीचे बिल्कुल योग आता ना आता मापसो एग्जैक्टली फुट पे आएगा तो 90 डिग्री डिप्रेस करना होगा सो ई कने अगेन द रेफरेंस लाइन इज व्हाट नता कैन अ स्ट्रेट लाइन यू नो इनिशियली यू आर लुकिंग स्ट्रेट अब आपको नीचे डिप्रेस करना है so this is what angle of depression of this ship which is nothing but angle कितना है it has to be 45 जब 45 आता है समझ आना भाई ट्रायंगल कौन सा है आइसोसेलेस ट्रायंगल अच्छा है दोस्त एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे आएगा नेक्स्ट सेकंड वाला शिप which is exactly behind this ship ठीक है मेरा ऑन द सेम साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट यहां से ये बनेगा आपका इन मानो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट दिस वन अगेन डिप्रेशन मींस यहां से आएगा एंड दिस इज 30 डिग्री इन मानो चलिए मेरा ओके ये भी लिख दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप मतलब दो शिप तो आपका ये है इन मानो खोंग इसके चिदुगलो डिस्टेंस मिंगलो दैट मींस लेट अस से द डिस्टेंस इज व्हाट x मीटर चलिए मेरा लेट टू फाइंड आता चिदुगलो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप फिर कंटेन ऐसी चीजें लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप बी x meter which is like very clear from adachi duglo diagram kana let the distance between the two ship is x meter वो लिखना है इतना इसना मानो ताई कर तुझे
ngata angle karu tansduk ya gay ka ngata angle karu tansduk dig powa iga tuziga tu tamshi piatene angle of depression ngata karu duk staga do abiruk which is like ngata chiduglo triangle inanko amiruk you know mano triangle inanko amiruk triangle inanko matches which no ada we will not be able to solve it yahan se to triangle hai nahi you know mano then by property u kaltes 45 ina e line iska parallel to ye kya hoga this is 45 alternate interior angle e line ka 45 so amaso acha eu 30 na eu samso you samsa no 30 degree then you learn this by property ka alternate interior angle ngata you dichno 30 and 45 also mouse now clear ngata triangle chichi du triangle chichi you du triangle chichi you do amiru acha egal to yeah let us named it a b c ngata chi duglo d ठीक है मेरा अच्छा egal to hawa mago ikana 45 do hai मतलब e triangle ina opposite na adjacent equal होत क्या if this is 75 this is 75 ina mano kao bc then ngata te fiachi choches in triangle abc 10 45 equal to opposite upon adjacent te kana ngata you equal chano ina mano yes or no you equal so okay test ina ngata next triangle bigger triangle ngata consider choose in triangle ngata chiduglo abd so 10 ngata sam duglo 30 degree equals to opposite upon ngata chiduglo adjacent so 10 30 sam no 1 upon under root 3 is equals to AB sum दुगा था 75 meter let it be BD मतलब चिन्ह होता है BD is BC plus DC इन अमनो yes or no that is ngata एक अच्छी चीज तो ना BD की जगह I replace what BC plus DC so और comma BC plus DC cross multiply on opposite 75 ngata sum of under root 3 done what is your BC here 75 plus DC sum duk x equals to 75 under root 3 no sum of acha next step or comma x 75 under root 3 minus ngata sum of 75 so x equals to 75 under root 3 minus 1 meter is the distance between two ships under root 3 ki jagah I'll mention what 1.732 minus chose multiply chose again for the sake of what calculation chila mera diagram na kazu saruk nalla khatta na pin inna choshik tayina statement change ho raha hai content tenne ka lagu ठीक है ओके देन थोड़े टेस्ट आला है ठीक है मेरा $48 marks total ठीक है मेरा हाउ मागो सोरा मसुर थोड़े टेस्ट आंसर नो टेस्ट तो रहा पाना नो हाउ मागो ये इगल तो कलते ईमानदार ना पुसिल ना 0 नंबर होना ठेल मठेल लर्निंग स्टेज नो कोई ना मानो yes or no लर्निंग स्टेज का जब स्लोप्स आने नंबर यू नते का फिगर चो सा मानो ठीक है मेरा थोड़े बोर्ड एग्जाम मार्च ना तांसनो ते टाइम का ठेल गोसानो इन मानो वो टाइम है अभी लर्निंग स्टेज है सो अमसो तेना तोला 10th क्लास में सिर्फ जीरो आता है एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है गोल ngati लाइफ इन अ करियर नो इन मानो हर गोल इमीडिएट गोल मुल क्लियर चोनसो तिंग गोल वो क्लियर सानो हमको टेस्ट इन 0 नंबर और नेगेटिव मगर लेकिन चीटिंग माने माचो टाइम मैनेजमेंट तो इट इज नॉट ओनली अबाउट चीटिंग आता शेष दोषे सा मेरुक ना टाइम फ्रेम इन आंगा कवर चोंगन तो ना बुक दैट इज इंपॉर्टेंट चले मेरा एंते खंपास तो त्यो इंट्रोस्पेक्ट चोतिक दुग मेरुक माने इन हमारो पेपर तो स्कोर पोंगा इन हमारो ते कने त्यो नो मेन अगेन वीकनेस चिक कची सीलन दुचन मगर एनालाइज माने चोचामन मन इंप्रूव सामनो चले मेरा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो कमेंट x इक्वल टू अंडर रूट 3 जाएगा 1.732 and then continue next question number 21 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree after some time the angle of elevation reduces to 30 degree so मेरा see the figure हमें नहीं पता figure same type question खाला चुस ना मचुस पिन
खाना लेक्चर जी ना दंग इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने किया था शायद बैलून चल बसो बट लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद सेम नहीं है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. आई थिंक किया था ये नो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून. चलो नहीं अगर किया भी तो कोई रिवीजन हो जाएगी. तो ग्राउंड 1.2 मीटर टॉल गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल समझो गर्ल क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लाइन पैरेलल टू द यानी बैलून एट एनी गिवन पॉइंट इज नॉट व्हाट चेंजिंग इट्स ठीक है मेरा ख्याल लेवल हाइट पोजीशन हाइट तिन्ना मेंटेन लो सकते हो हॉरिजॉन्टल सो हमसो हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ सम सोलो almost 1.2 meter. So balloon must be here somewhere. You know, balloon का क्या height पूछा मत क्या? Height पूछा मत. Height समझ लो 88.2 meter. यानी for example कर तो जाए ये कहना पतंग अगर उड़ाता हूँ वैसा वैसा ये ना मानो ये balloon उड़ रहा है height मंगाता हमें से कहना नहीं ना मानो height क्यों चीज़ string you know height पूरी करना चाहनो से हम सोएस ना ताची दुगलो balloon है. Okay. Height goes on the 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is what 60 degree. Ikane angle of elevation means of course with respect to matachiongos horizontal. So elevation is what 60 degree at any instant. You know mano the time g ka. Now अच्छा ये केस है ना अच्छा last time matachiongos बैलून मूव कर रहा था कि लाइक द पॉइंट मूव शोध पिन है इन मानो फ्रॉम अनदर पॉइंट करते थे व्यू चोना लेकिन ई केस ने दुगलो द बैलून इज मूविंग कंटीन्यूअस प्रेजेंट जो चीज आता है इंग्लिश में समझो ये चल रहा है तो समझो एट एनी इंस्टेंट व्हेन शी लाइक looks at what balloon angle of elevation was 60 degree but this ने दुगलो the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree ठीक है after some time कुछ टाइम के बाद the angle of elevation reduces to 30 degree. Now, अगर angle of elevation reduce है ना, तो balloon की movement is away from the girl or towards the girl. Away from the girl. Angle of elevation न्यून सोचो. Towards the girl है ना, भाई बंचने जो स्टाव समझोस, बिल्कुल overhead हो ना पूरे 90 degree ताऊ जो ये ना मारो मतलब ये कहना हाँ होगा मगो. That means balloon कहाँ move कर रहा है? Towards. टूवर्ड्स हाँ हमें तो आदत सी हो गया मानो मान लेते हैं बैलून in position now second ही क्या because it is moving horizontally तो it will maintain its height ये ना मानो the angle of elevation हम दुखवे देने 30 degree angle of elevation means again with respect to this one this is what 30 degree ये ना मानो ठीक है मेरा 30 डिग्री हो आका 60 डिग्री हो ठीक है सर नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल को कहने का सुपरडूल्स यहां से यहां चला लेट अस से द डिस्टेंस ट्रेवल इज व्हाट x मीटर टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल देन यू पिक आता चीज से लेट द डिस्टेंस जब गाता रिचन ठीक है मेरा लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज व्हाट x मीटर bx मीटर इन मानो इतना डिस्टेंस को डूल समडू लेकिन तय करतो आता ट्रायंगल प्रोजेक्शन थोंदो एक ट्रायंगल थोंदो अब ये हमें ड्रॉ करना है भाई स्टेप बाय स्टेप करना ड्रॉप चोस ई पिलर के करना ड्रॉप चोना ठीक है मंडिक ऑफ कोर्स इट इज 90 डिग्री इट इज 90 डिग्री इट इज 90 डिग्री अच्छा तेनेगा यहां करना यू एक्सटेंड चोना ठीक है मेरा सो ट्रायंगल थोंदो मथवा ಈಗ 90 सोना मथवा ये ट्रायंगल ना ये ट्रायंगल बस इन्ना इसके ना नहीं होता क्या सब कुछ इसमें छुपा हुआ है इलो मानो अच्छा ये कर तुझे ये कर तो कैलकुलेशन यू खंपा चलेंगे क्या जुक चोदी कर तो ये हाइट पता में होते ने 1.2 ये हाइट पता में 1.2 because opposite sides of parallelograms are equal ये ना मानो टोटल सम 88.2 तो ये वाला हाइट कितना होगा फिर 88.2 minus 1.2 which is 87 meter you 87 तो नहीं आंसर में दोनों 87 meter ठीक है मंडिक if you know one angle one side trigonometry कहता है you can determine any other sides ये साइड आ जाएगा
Okay, let us name it. A, B, C, D, E, F, G, H. करू चूस का जाएगा मीट छात पॉइंट पुन तेना जाएगा मिंग तो छे मेरा so that nothing is left behind. In any case, नता के property geometry property use होगा सीका. My target is what GF. That is X, and that is also equal to ngata chino HE. That is also equal to CD. Ina mano. Taji chu chiste nega. In triangle chi dunga ta. AHG. Ina mano. AHG tan 60 equal to something. GH opposite upon H. Tan 60 samno. Root 3. GH samno. 87. AH samno. Let it be AH only. Okay, vera. Then AH in other distance samos. AH equal to 87 upon root 3. In amano, but in Nazubarina, rationalize switches. Under root 3 multiply, under root 3 divide. So AH equal to 87 under root 3 divided by some 3 so 3 now you divide some yes 3 1s are 3 2s are 6 7 8 3 9s are 27. So therefore AH equal to kitna hua 29 under root 3 meters. In amano. So AH ngata ka yonslo yonslo e distance po. E distance samos 29 under root 3 meter. Mira. Yes or no? You somebody sir, sir. ठीक है मंडिक एज को बताऊं दिस में ना व्हाट में दिस तने उसको slow and steady wins the race स्कूल अखा के सदरिंग तुम सासुजी हाँ ते पेन खुरसो में स्कूल स्कूल पद में दिस में देंद्रिंग हाँ देख फंक्शन है बिना ची फंक्शन हाँ कैसा हाँ समय कैसा या क्या चीज़ों से स्कूल है हाँ ठीक है somebody sir okay this thing नहीं करते h equal to 29 under root 3 meter d somebody next बोलते in triangle का चीज़ होता है in triangle का नहीं निकला AEF का tan 30 is equals to opposite चीज़ होता है EF upon ngata चीज़ होगा AE tan 30 is 1 by under root 3 is equal to EF सम दूंगा था 87 of course it is 87 AE ngata चलो ठीक है AE ऐसे लिख देते हैं therefore AE equal to सम बना था 87 under root 3 अच्छा what is your AE यार AE को क्या लिख सकता हूँ मैं AE is H plus HE is equals to 87 into under root 3 ये ना मानो अच्छा ngata AH पे थोप तो दसा मत 29 under root 3 ina mano what is you सच चुपर गुपर चुपे ना जेर गोसा मानो you see so मानो उल्टा ई ना वा सर्विस ने ना तेना फिलोग ना ई का तेना फरा सारू छे मेरा आका सर्विस ने ना नो सो मासो ये पढ़ो ये होते ई का तेना सबका सील चोस फाना नो सील ठीक है मेरा तीन आइसक्रीम थोबा नो चॉकलेट थोबा नो ठीक है मंडिक साइकिल तुझे मतलब यू पता नो AH यहाँ लिख देता हूँ I'll repeat this AH plus HE
is equals to 87 point क्या है under root 3. What is your age? 29 under root 3 plus natachi duglo he is equals to 87 under root 3. Of course, now kana or comma use shows or comma. So what is your he? He equal to 87 under root 3 minus 29 under root 3, which is what like terms in a mano can be added, can be subtracted. 87 nang nahi kaltes 29 putna sa mano. In a mano 87 nang nahi 29 putna sa mano. 67. Oh, 58 hala. 58 under root 3 meter. In a mano. Tai kaltos. He ngata samos. 58 on samos. He kano. You on samos. You samos. 58 under root 3. Inner distance for you distance in a mano. He equal to x equal to gf. X yung ngata samos. 58 under root 3 meter. Yani the balloon travel distance kitna? 58 in a mano. When her angle of elevation changes from 60 degree to 30 degree. देख दिसारा कसो लामो हाँ बस लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट टेस्ट इन एमसीक्यू अगर टाइम मिला तो टाइम थकने से मैं शायद दसो एमसीक्यू लंच इस दोस्तों तेरे टेक रैप अप चुन दे नेक्स्ट टॉपिक से दुलवाता है ना 10th ने से दु सर्कल गोला आत्मा जाग गया हाँ कुछ बोला कम से कम ओके a straight highway leads to the foot of natachi duglo foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Depression मतलब नीचे देख रहे which is approaching the foot of the tower with a physics with a uniform speed. It's approaching with the uniform speed. Acha, what is uniform speed? Equal distance covered in equal interval of time. In amano. Acha, nga ikane schema asun kya? ठीक है मेरा throughout the journey acceleration 0 क्या possible ही ना है हाँ throughout the journey acceleration 0 क्या ना पढ़ना लेप क्या नीमा acceleration 0 क्या possible ही ना टेस्ला हाँ टाइम टेबल टाइम ट्रेवल अच्छा टाइम ट्रेवल मैं ना फिजिकली ना ले वाला क्या पागा ना ही कने मान लो जम्मू गया मैं ठीक है throughout the journey my acceleration was 0 ठीक है मेरा but I still there in जम्मू ना ले क्या 3 घंटे में मैं पहुंच गया वहां पे is it possible हाँ कैसे हाँ चीट क्या लो acceleration 0 क्या ना ले बनवा yes or no ले बना acceleration 0 क्या ना ही का ना रूल है वहां लिप क्या possible ही ना या contradiction ना होगा you know yes you know मानो you know 9th class magala silto huh impossible acceleration is rate of change of velocity rate of matlab with respect to time change in velocity if initial velocity equal to final velocity matlab chino uniform velocity speed uniform borna constant borna acceleration 0 छाना समनो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं इसका मान लो 50 मीटर पर मतलब 50 किलोमीटर पर आवर होता स्पीड दो मेरे डूल डूलत क्या बच्ची नो लो यूनिफॉर्म आता जो गडल के चलिए मेरा सो एक्सेलरेशन ग्राफ में वजह से ना एक्सेलरेशन 0 तो छोड़ो यार कहां से कहां आ रहा है तंगता ई क्वेश्चन इन इंटरेस्टेड स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर लो सो मसो लेट अस से दिस इज द टावर इज ऑन द ग्राउंड ठीक है मेरा a straight highway you have a mago tar road is sonto no tower ही कहना no a straight highway leads to a foot of the tower ठीक है leads to a foot of the tower
ठीक है मेरा यहां से गया a man standing at the top of the tower ठीक है मेरा man standing here at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree ई पॉइंट ठिकाणी खोय एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यो आता हो समगोस सो रेफरेंस पॉइंट ये जन एजू ना सो एंगल ऑफ डिप्रेशन करू छानो 30 डिग्री दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इन हमारा तो कार यहां पे होगा ठीक है मेरा which is approaching the foot of the tower मतलब which is approaching मतलब the car is approaching the foot of the tower it is coming towards the building इन हमारा कार पर यूं ट्रैवल चो क्या ठीक है मेरा foot of the tower with a uniform speed चांग होते मुक्तम डिस्टेंस ऑफ सी सॉन्ग बट ये चीज दुगलो it is traveling with a uniform speed towards this direction ठीक है सरकार 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड के बाद का टाइम दांस ठीक है मेरा 6 सेकंड लेटर the angle of depression of the car is found to be what 60 degree the angle of elevation मतलब कार का सेकंड पोजीशन कहां होगा इधर होगा ही ना मानो so angle of depression happens to be what again ngata can azuk just depression so this is what angle of depression is what angle of depression ngata cha chano ये वाला होगा पूरा ina मानो so this is 60 degree ina मानो but e का सुपर खो ट्रैवल वाला डिस्टेंस तो गिवन नहीं है but certainly time given है time equals to what let us say time 1 equal to कितना है it is 6 second 6 second में the angle of depression changes in the sense if this is 30 you know 30 by alternate interior angle if this is 60 ये angle सा know 60 degree chief here alternate interior angle in amano car is approaching अभी चल रहा है but 6 second later 60 degree आता है depression find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point from this point का u point का point foot of the tower तंगा हागो from this point लो का point हाँ क्या करना 60 डिग्री से बनोगे 30 डिग्री करना from this point ई करने ई का चुप बंगाता टाइम फिक्स देता it is what time 2 in amano taiga to the role chino like a uniform speed will play the role uniform speed matlab chino initial final hamesha same resolution in amano iga to e ka some 6 speed yot e interval na tenna speed ka cha cheno because car is traveling with what uniform speed in amano acha iga to so yeah speed is equal to chino hota distance upon time केस सी का कंसीडर चोज लेट अस से स्पीड 1 की बात करते हैं दैट इज व्हाट डिस्टेंस 1 अपॉन अताची दुगलो टाइम 1 इन मानो अच्छा स्पीड 2 इमो छो योत्या मेत्या बिकॉज़ यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन अता चेंज सो स्पीड 2 इक्वल टू लेट अस से द डिस्टेंस टेबल इज व्हाट d2 अपॉन अताची दुगलो टाइम 2 और पूछा है व्हाट इज योर टाइम 2 इन मानो सिंस कार इज ट्रैवलिंग विद व्हाट सिंस कार इज traveling with which duglo uniform speed therefore s1 must be equal to s2 in amano uniform speed matlab s1 equal to s2 so in amano uniform speed का मतलब speed source होता है s1 equal to s2 ठीक है मेरा in amano अच्छा तय कर तुझे you ngata discuss that means ngata is an idea d1 upon t1 equals to d2 upon t2 we know what is t1 that is 6 in a mano yang ngata information ना होएगा nothing else in a mano angle depression के अलावा कुछ भी नहीं है ताई का तो ता हाइट एंड डिस्टेंस होएगा a b c and D. ठीक है मेरा A B ना C D समझ दिसा अच्छा ये तो मतलब you this तो ना okay otherwise like trigonometry task लिखते हैं since the car is traveling with uniform speed तब लिखता था ये बड़ी का uniform speed का था चीज़ दुगलो क्रक्स को ठीक है मेरा decode सोचे से point for ना otherwise done so मैं कहता हूँ सर in triangle का consider चुनते in triangle A B C let us say 10 60 तक ना is equals to opposite that is what AB upon ngata chi duglo BC
अच्छा बीसी जाएगा टी टू डी नंगाती सी ने डी सुपर टी वन बी ने सी सुपर टी टू तेने बीसी जाएगा टी टू डी नंगाती दिया मानो वो टाइम था दिस इज डिस्टेंस in amount of trigonometry study about the ratio of sides of a triangle with respect to angle so sides are distance so कभी भी गलती से यहाँ पे t2 t1 मडी टाइम करो फैक्टर्स हो सोनो फिजिकल क्वांटिटीज हो सोनो और कोमा 10 60 is what √3 and what is your ab नहीं है कुछ भाई लिखो इसको ऐसे ही रखो अपन गदाची दुगलो bc let it be bc for ना मानो that means ab equals to certainly √3 into गदा हम सोलो bc let it be for a time being इन मानो अच्छा देन अगेन इन ट्रायंगल गदाची दुगलो a b d काउ 10 30 equals to ab upon what हाँ bd yes 10 30 माने 1 upon √3 is equals to ab इन मानो ये इका क्रॉस चुन दिया कर लो यार ab upon bd that means गदा इका ची दुगलो bd equals to गदा समसो ab √3 सो आमासो इन मानो ताई गलतोस इका स्टॉप चुस्ता we are very close to the answer uniform speeding आता तो क्रॉस हमने हटा दिया ab bc bd ab समझी नो डिस्टेंस अब डिस्टेंस यहीं से तो रिलेशन डेवलप करना है ab ना ab वेरिएबल चिक bc वेरिएबल मींस bd वेरिएबल soon we have 3 variables number of equation only 2 फेल हूं इन मानो बट अगर इफ आई टेक अ क्लोजर लुक bd कैन बी रिटन एज व्हाट bd कैन बी रिटन एज हाँ bd अच्छा अच्छा ठीक है तो ab गता ची दुगलो दिस इज हाइट ऑफ द गता रुक दो अभी रुक छे मेरा तो ab दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ची दुगता ab या यहां से पुट ab इक्वल टू ची दुगलो √3 bc इन इक्वेशन नंबर 2 कर सकता हूं ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस प्रॉपर्टीज पुट ab इक्वल टू मेरा ना वेरिएबल सुन मैं समझ गया कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे बट देन वी नोटिस दैट ab हैज नथिंग टू डू विद दिस डायग्राम सो पुट ab इक्वल टू √3 bc इन इक्वेशन नंबर गता ची दुगलो Sumera Anjum, good evening, sir. Very good evening. Actually, having some back issues, so I'm sitting here at this chair, so you won't be able to see me. AB equal to √3 BC. So put AB equal to √3 BC in equation number this one. So that means what we have here is what? Matachi chonolo. BD is equals to AB की जगह I'll replace what? √3 into BC, and you already have √3 here. In a mano from this ये put करना है. Next, BD equals to √3 into √3. It is what? 3 BC. Okay. In a mano. Now again, BD and BC, they are happening on the same line. This is B and this is what? D. BD and BC. In a mano. ताई कर तो यार. बताएं क्या चीज distance 1 time 1. So what is your distance 1? Distance 1 is, अब ये वाला पार्ट आपने रिपीट करना है. प्लीज रिपीट दिस वन सिंस कार इज ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. समझो s1 upon s1 equals to s2. s1 upon s1 equal to s2 d1 upon t1 equal to d2 upon t2. इसके बाद लिखो what is your d1. d1 समझो d1 is cd. इन होता cd is your distance. So cd upon आपके पास क्या है? What is your t1? 6 it is given. In amano 6 it is given is equals to what is your d2? bc upon गदाची दुगलो t2. ठीक है मेरा? Yes or no? ताई कर तो CD and BC सो हमसो एक अच्छी दूंगा था BD and BC. BD is entire length. So instead of what writing BD मैं क्या लिख सकता हूँ? BC plus CD. BD है इन मानो
BDCD ना BC plus CD equals to 3 times आपके पास क्या होगा BC, so BC राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, so CD equals to कितना होगा, it is 2 times आपका क्या होगा BC, ठीक है मटिक, यहाँ देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ठीक है मेरा CD पुट CD equals to what, यहाँ पुट कर लो, ठीक है मेरा CD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 times BC upon आता था 6 equals to BC upon आता था T2, so BC and BC is gone, 2 1s are 2, 2 3s are 6, therefore time taken by this is what, time 2 is what, 3 second or what, 3 second, okay मेरा from this point it takes 3 seconds to reach what, the foot of the tower. Total time taken by था मैंने starting point ने total time is 9 second. इन हमारा क्वेश्चन से एक रिवीजन चूस, ठीक है मेरा, ओके सर, हल्का सा रिवीजन, ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का खत्म होता था, एनसीईआरटी पूरा डन, ठीक है मेरा ताकि एमसीक्यू टेक्स्ट हो जाए या दो डन, ग्रुप का कलते क्वेश्चन 1 2 ना sin थीटा हुन्छ नतेका मिसिङ दुख sin या cos ऑप्शन ए बी सी सो आमासो ओ तो करेक्ट छ अदरवाइज इट इज डन, ठीक है तेने लंच को तो ट्राई చూస్తాం नेक्स्ट टाइम का डिस्कशन ओनली आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तो डिस्कस చూస్తున్నా लंच सॉल्व చూస్తాం तेने लामो डिस्कशन हो एमसीक्यू ऑलरेडी ग्रुप इन कलते, ठीक है मेरा यहाँ पर बुक तेना रिवीजन चोइंदु ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नाला सीजन लो सर्कल इस नहीं दुख चेक ना सर सर्कल इस नहीं दुख टॉपिक surface area and volume again 9th class सील तो going to be very easy, otherwise formula दासा नहीं याद चोस, otherwise we will give the connection, ठीक है मेरा surface area and volume 9th class फॉर अनोपासी का चेक ना था shape चेक ना था सुसुयानो surface area and volume यहाँ से दुख देसी ना statistics हो जाएगा डन, probability तो है wonderful, ठीक है yeah thank you so much then थोड़े टेस्ट नहीं आला कहाँ होता नोला